Very good. कि जैसा मैं कल कहा था हम करेंगे, हमने बेसिकली किया था ये, if you take en and runs from minus infinity to infinity, अगर मैं लेता हूँ क्या बोलते हैं Cn को, या बेसिकली अगर मैं इसका फूरियर एक्सपेंशन अगर मैं लेता हूँ nft, I think मैंने लिया था 1/√2 pi reduced power iota nx. So this is my en. Then this forms an orthonormal set in L2 0 to pi, the measurable functions whole squares or Lebesgue integrable on the interval 0 to pi. तो हमने of course इसकी फिर फूरियर एक्सपेंशन बनेगी, तो any f कोई भी फंक्शन अगर यहाँ है, and you should be able to write it as summation, let's call it f(en) and runs from minus infinity to infinity, where this I can just call this to be Cn. Cn is my fen. So it's my inner product here, that would be 1/2, 1 be 0 to 2 pi f of t into e raised power minus iota nt dt. तो इस तरह से तो हमने बेसिकली ये दिखाया था कि then by Parseval's identity or Bessel's inequality, this summation Cn square n runs from minus infinity to infinity should be convergent. And if for every f belonging to this, I have found a sequence Cn that is square summable, that belongs to small L2. And if for this, we get this. Actually, converse be also true. If I can find a sequence here, or I can find an f here. लेकिन उसके लिए मैंने कहा था हमें चाहिए रीज-फिशर थ्योरम उसको प्रूव करने के लिए. So let's prove Rees-Fisher theorem. तो Rees-Fisher theorem में है, just a minute, कहाँ है? ये स्टिल में थोड़ा मैं इसको अवॉइड इसलिए कर रहा था क्योंकि बेसिकली रीज-फिशर थ्योरम के लिए चाहिए हमें थोड़ा लेबिग इंटीग्रेशन का बैकग्राउंड, और मैं मान के चलता हूँ अब तुम्हें वो थोड़ा सा पता होगा. सो रीज-फिशर थ्योरम के लिए हमें चाहिए लीवाइस थ्योरम, Levi's monotone convergence theorem, and Lebesgue's dominated convergence theorem for Lebesgue integrable functions. So let me, मैं साथ में बताता जाऊंगा अब, चूंकि मैं अलग से वो नहीं कर सकता, वो तुमने किया होगा. और दूसरा ये जो रीज-फिशर थ्योरम है, हमने बेसिकली इससे पहले मतलब फंक्शन सेकंड में भी ये रिपीट होता है. मेरे दिमाग में वो भी था कि क्योंकि ये फंक्शन सेकंड में है तो इसलिए शायद यहाँ पे नहीं होगा. Actually, this could be any AB, right? Is complete. By that I mean it's a complete metric space, normal linear space. It's the normal linear space. Basically, हम जो है ये वाला प्रूव, ये चीज प्रूव करना चाहते हैं. So I just rub it here. So what I want to show you here, पहले तो ये है क्या? This is an inner product space, and inner product Fg for all Fg belonging to, of course, LP 0 to pi. These are basically LP 0 to pi would be all scalar valued functions defined on 0 to pi such that f is measurable, and basically integral over this 0 to pi
ft mu, of course in mod raised to power p is less than 30. It's an inner product space for p equal to 2. But it's a normal linear space always. यानी इसका जो norm है, norm इसका है, अगर इस पे inner product define करें, but that is for p equal to 2, इसमें जो inner product होगा वो होगा 0 to 2 pi ft g to the power dt d mu. This would be for p equal to 2, लेकिन in general इसका जो norm है वो होगा norm of fa. Each norm is nothing but integral over this set 0 to pi, and we are talking about Lebesgue integral. तो यूजुअली हम Lebesgue इंटीग्रल में ये t नहीं लिखते, सीधे f लिख देते हैं. ये बड़ा नॉर्मल है, ये है अपना नॉर्म. ओके, सो ये इस पे नॉर्म है और हम दिखाना चाहते हैं अंडर दिस नॉर्म इट इज अ कंप्लीट नॉर्मल लिनियर स्पेस. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें कोशी सीक्वेंस लेंगे और दिखाएंगे वो कन्वर्जेंट है. नाउ लेट fn be okay, इरेजर कहाँ गया. Let fn be a Cauchy sequence in L sub p 0 to pi. I can do it for any AB, so in particular for 0 to pi. Now, to prove that Fn is convergent in it suffices to show that Fn has a Cauchy sequence. Oh, sorry. Cauchy sequence to A has a convergent subsequence. Has a subsequence that converges in LP0 to pi. Because it's a normal linear space, but normal linear space is a metric space. So metric space में ये है कि if a Cauchy sequence has a convergent subsequence, then it, ये हमने इससे पहले भी मैंने शायद तुम्हें होम असाइनमेंट दिया था कि in a metric space, if you have a Cauchy sequence which has a convergent subsequence, then the sequence also converges. So that's very easy to prove. दो लाइन्स में हो जाएगा, लेकिन तुम देख लेना metric space. Now, hence मैं यहाँ ये करूँगा, passing to a subsequence if necessary. मैंने अभी इसको explain करूँगा. To a subsequence if necessary. We may assume that norm of f sub n plus 1 minus f sub n, pth norm, is strictly less than 1 by 2n. तो मेरे कहने का मतलब है, since the sequence is Cauchy, I can always choose a subsequence which has this property. Cauchy sequence का मतलब क्या है? I've got f1, f2, f3, so on and so forth, f some million, and then get one more. तो इसका मतलब जैसे ही ये n बढ़ेगा, इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो बहुत कम होती जाएगी, arbitrarily close हो जाएगी. तो एक सिचुएशन, एक सी टाइम जरूर आएगा जब जो कंसेक्यूटिव टर्म्स होंगी वो लेस देन इक्वल टू 1 by 2n होगी. मैं लूंगा वहां पे मेरी पहली टर्म, राइट. फिर देखूंगा नेक्स्ट टर्म, क्योंकि ये सीक्वेंस की टर्म्स जो हैं आपस में कन्वर्ज हो रही हैं, सो आई कैन फाइंड दैट मतलब इवेंचुअली the difference between f2 and f3 is less than 1 by 4. f3 and f4 and f5, now I can always choose such a subsequence such that this is true by taking sequences, terms
मतलब हायर ऑर्डर टर्म्स इफ नेसेसरी हो सकता है पहली वाली दो टर्म्स का डिस्टेंस ही लेस देन 1/2 हो, वो भी पॉसिबल है, वी डोंट नो। तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर जरूरी हुआ तो हम एक सबसीक्वेंस ऐसे लेंगे तो हम ये मान के चल सकते हैं, मतलब आई कैन चूज, मतलब मैं इसी का नाम मतलब बिना ज्यादा कॉम्प्लिकेट किए ये हमने यूज किया था, आई थिंक व्हेन वी शोड दैट x by y, सेम आइडिया is normal linear is Banach space, उसको फिर से देख लेना। इफ यही आइडिया हमने यूज किया, इफ y is complete, तो उसके उस वक्त हमने इसी तरह से एक सबसीक्वेंस ली थी। यहाँ हम कह रहे हैं सबसीक्वेंस नहीं, इसका नाम वही रख देते हैं, इसका नाम भी बदल देते हैं, इसको हम इसकी सबसीक्वेंस मानेंगे तो इंडेक्सिंग में थोड़ा सा चेंज कर देंगे एंड we're done. So it implies that using the property of this, जो इसकी definition है, so it means that integral over the set 0 to pi mod of fn plus 1 of t minus fn of t raised power p whole raised power 1 by p is less than 1 by 2 raised power n for all n running from 1 to so on and so forth. And let us take f or naught of t to be identically zero for all t belonging. हम एक function जो zero function हमने इसके साथ जोड़ दी just to make our argument a little complete. Now we consider this function. Consider gn of t to be summation j runs from 0 to n fj plus 1 of t minus fj of t. Basically ये function एक नॉन नेगेटिव फंक्शन हमने खड़ी की यूजिंग द f. सो बेसिकली ये आएगी क्या, j0 होगा तो ये होगा f1 of t माइनस f0 of t. f0 हमने खुद ही किया एक फंक्शन को खड़ा, प्लस ये है f2 of t माइनस f1 of t, राइट? लेकिन दिस इज जस्ट जीरो, से कोई फर्क, जस्ट टू मेक द आर्गुमेंट कंप्लीट, और कुछ नहीं। हमने f0t को ऐसे ही जीरो इंट्रोड्यूस कर दिया क्योंकि जीरो के सबट्रैक्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सो ऑन एंड सो फोर्थ, प्लस हमने लिया f of course n plus 1 of t minus fn of t. So that would be our function जो हमने यहाँ ली, and let g of t be the infinite sum summation j runs from 0 to infinity. Same thing, fj plus 1 of t minus fj of t. Okay, now by Minkowski's inequality, now you little integral over the interval ab gn of t raised to power p d mu, मैंने dt तो नहीं लिखा, और यहाँ यूजुअली लिखते भी नहीं हम ये इंटीग्रल का ये, तो लिबिक इंटीग्रेशन में हम बहुत लिबर्टी लेते हैं इसके साथ, ये न लिखना, raised to power 1 by p बराबर होगा then summation of course integral j runs from 0 to n fj plus 1 whole t minus fjt raised to power whole raised to power p d mu, this whole raised power 1 by p, and by Minkowski's inequality this should be less than, we can take the sum outside, summation j runs from, because p is bigger than or equal to 1, so Minkowski inequality applies, so ये बन जाएगा integral a of over this. तो I think it's not, actually मैंने notes में लिखा है ab, लेकिन यहाँ मैंने लिया है 0 to pi, ये दिक्कत, so it would be fj plus 1 of t minus fj of t raised to power p. So then I have this mu whole raised to power p. तो अगर इस सम को रन करे, this would be equal to, मैं पहली टर्म को अलग करूंगा, j को 0 दूंगा, so this would be basically integral j के ऊपर 0 देंगे, 0 to 2 pi, it is just f1 of t minus f0 of t is 0,
मैं उसको अलग करना चाहूंगा। Plus summation integral e to b. What do I have? I have got this. Okay. F G. Sir, 0 to 2 pi. ये भी नहीं है 0 to 2 pi. So I've got J runs from 0 wali term to many dd 1 to n, right? Fj minus j into Fj raised to power p d mu. Of course, this thing always power 1 by, right? So this is equal to, इसको मैं ऐसे ही रख सकता हूँ 0 to 2 pi, या सिंपली मैं इसको लिख सकता हूँ F1 norm p plus norm of summation j runs from 1 to n norm of fj plus 1. यहाँ मैं t लिखना भूल गया, उसकी वजह है बेबिग इंटीग्रेशन में यूजुअली हम नहीं लिखते, मैंने भी नोट्स में नहीं लिखा है। So that would be, of course, norm of fj plus 1 minus fj का pth norm. Now using this, let's call the star, तो हमने ही इसके बराबर हमेशा होता है. So that means this is actually strictly less than norm of f1 of p plus summation j runs from 1 to n 1 by 2 raised power j, which would always be strictly less than plus 1, क्योंकि ये 1 से हमेशा छोटा हो. 1 by 2 plus 1 by 4 plus 1 by 8, it converges to 1 as a geometric series, but it is always less than 1 as long as this is a finite sum. So what do I get? That gives me, I've got integral 0 to 1, क्या था मेरा? GNP, integral over 0 to 2 pi, जो मुझे यहाँ से मिला, GNT raised to power p d mu whole raised power 1 by p is less than equal to, because f are Lebesgue integrable, तो इन पे मैं norm apply कर सकता हूँ, तो this is less than equal to norm of f1p plus 1. It is strictly less actually. Now also ये जो g's है, g1 अगर मैं लेता हूँ, g2 लेता हूँ, इसमें क्या होगा? इसमें टर्म्स है, मतलब g1 ये है ना, खाली पहली वाली टर्म, g2 क्या है? एक और चीज मैंने ऐड की. So it is a sequence of monotonic increasing functions that are non-negative. Now clearly this is true. This is a monotonic increasing function for all t belonging to 0 to pi, and of course I can just, it implies that क्योंकि ये non-negative है, तो 0 is less than g1 of t raised to power p is less than g2 raised to power p less than equal to this for all t belonging to 0, 1, and for all p bigger than equal to 1, such that, so I've got such that integral over 0 to 2 pi g and t raised to power p d mu raised to power 1 by p, yeah, इस तरह से this thing is less than equal to norm of f1 p plus 1 raised to power p. यहाँ का 1 by p मैंने हटा दिया. So I've got a, so Levi's theorem कहता है, the Levi's theorem basically says, Levi's monotone convergence theorem, if you have an integrable functions, right? So let me write down the statement. If you have a sequence of functions that this holds almost everywhere, यहाँ तो हर एक के लिए, even if this was true, this monotonic increasing positive functions was true for
almost everywhere, although this is true for all t here. And of course, then what happens? Then के साथ मैं कह रहा हूँ, अगर ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जैसे कि यहाँ पे है ऑलमोस्ट एवरीवेयर, एंड उसका जो इंटीग्रल है फॉर ऑल n, ये दिस इज ट्रू फॉर ऑल n, it is less than infinity, and this is less than infinity, then there exists an integral function such that this g लिमिट ऑफ दिस, हाँ, यानी इसका एक ऑलमोस्ट एवरीवेयर लिमिट एग्जिस्ट करता है, यानी इसका ऑलमोस्ट एवरीवेयर लिमिट एग्जिस्ट करता है. तो therefore that's what I write by Levi's theorem. By Levi's theorem, there exists G belonging to LP 0 2 pi, यानी जिसका p to power ये है, such that 0 is less than Gn increasingly approaches GAE. Obviously जो increasing है इसका लिमिट भी increasing में जाएगा, तो इसको ऊपर की तरफ एरो दिखाते हैं, ये लेवी की इंटीग्रेशन में हम ऐसे करते हैं. Also from the function that I can write this fn plus k minus fn, तो ये इसमें एक अच्छी ट्रिक है, इसको मैं लिख सकता हूँ as summation I runs from n plus 1 to n plus k as a telescoping sum. I can write it as fi minus 1, which would be less than equal to summation I runs from 1 to n plus 1 to n plus 1 to n plus k fi minus 1, which is basically equal to mod of gn plus k minus gn. से मॉड लगा, मॉड नहीं है एक्चुअली, मॉड के बगैर ही है, बट चूंकि ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है तो मॉड लगाओ भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो चलो मैं ऐसे लिखता हूँ, फिर लिख सकता हूँ ऐसे, दिस इज द सेम एज जी एन के माइनस जी. अब देखो मैंने फिर से वही की जैसा कि हम लेवी इंटीग्रेशन में ये टी लिखना भूल जाते हैं, क्योंकि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता बोलते हैं, और यहाँ पर भी नहीं है बेसिकली, बट वी नो वेयर द टी लाइज. सो ये इंक्रीजिंग है तो ये इससे बड़ा ही होगा. ओके, तो ये मुझे मिल गया. सो इट फॉलोज दैट fn converges pointwise to AE. Because this is true AE, and what does that mean? So you've got fn Cauchy sequence है, right? तो Cauchy sequence means, मतलब अगर मैं यहाँ जाऊँ, हाँ, fn जो हमने लिया है ये Cauchy sequence है, तो that means what? It comes arbitrarily close, है ना? तो मेरे कहने का मतलब है, अगर ये अंदर वाला 0 हो जाएगा, या अगर नॉर्म की ये प्रॉपर्टी है, नॉर्म की ये प्रॉपर्टी है कि अगर अंदर वाला जो नंबर है या जो भी वेक्टर है 0 होने लगे, या अगर नॉर्म 0 होने लगे तो अंदर वाला वेक्टर 0 होने लगेगा. तो that's the first property of the norm because of continuity of the norm. So therefore चूंकि ये इसके बराबर है और ये सीक्वेंस जो है AE कन्वर्ज करती है, therefore ये AE होगी, मतलब ये AE 0 हो जाएगा, as मतलब n becomes very very large, लेकिन ये तो इससे छोटा है, so that means ये AE 0 हो जाएगा, which means that what? But मतलब these are scalar functions, तो मैं नॉर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, तो नॉर्म में कन्वर्ज होना दूसरा है, मॉडुलस में कन्वर्ज होना दूसरा है. तो इसका मतलब ये हुआ कि it implies that, या it follows that, या since ऐसे मैं लिखता हूँ Gn converges, it follows that AE
almost everywhere, it follows that Fn converges pointwise almost everywhere AE on 0 to pi. पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस तो इसमें कोई पॉइंट वाइज लिमिट होगा तो हम उसका फंक्शन ले सकते हैं टू सम फंक्शन f. ये हमारा पहला स्टेप हो गया कि fn converges pointwise to f, but we have to show that fn converges to some f in norm. तो वो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा. Now also mod of fn can be written as a telescopic sum, जो हमने इससे पहले लिखा था, f1 plus summation I runs from 2 to n fi minus 1, which is less than equal to, this is basically by triangle inequality, less than equal to gn, which is less than equal to g for some g ae Lebesgue integrable function. It means that mod ये converge करता है तो for all n है, तो इसका मतलब f जो हमारा इसका point wise limit है, f is dominated by g ae on ae for all n. तो अगर ऐसा है, hence by what we call Lebesgue's dominated convergence theorem. Lebesgue dominated convergence theorem. F जो mod f है, नहीं, f belongs to LP 0 to. Is it Lebesgue's dominated convergence theorem? Right. If you have a sequence of functions that is pointwise dominated, which are Lebesgue integrable functions, so yes, तो अगर वो dominate है by some Lebesgue integrable function, then f belongs to LP mu, and ft minus fnt is less than equal to twice gt. That's obviously because ft is less than equal to gt, तो वो ये positive है almost everywhere on 0 to pi. So which implies that limit n approaches infinity, fnt minus ft p is equal to 0. ये implies नहीं अलग से होगा because ये इसको converge करेगा. So therefore 0 is equal to limit n approaches infinity 0 to pi, what should I write, fn t minus ft raised to p, which is equal to limit n approaches infinity 0 to pi fn, इसको d में लिख लो. अगर ये 0 है तो इंटीग्रेट करेंगे तो 0 ही होगा. So in the limit, तो हम लिमिट बाहर निकाल सकते हैं. Basically this is again, I have not given you the full statement. Basically this is again by Lebesgue's dominated convergence theorem. We can take the limit outside if the function, the sequence of functions is dominated by some Lebesgue integrable function, जो कि था यहाँ पे 2g. So तो यहाँ पर भी मैं लिखता हूँ Lebesgue's dominated convergence theorem. So once I've done that, I'm actually almost finished. This implies limit n approaches infinity, norm of fn minus f p whole raised power p, क्योंकि norm जो है उसका raised power p है, which implies that of course limit n approaches infinity, norm of fn minus f pth norm is equal to 0, which implies that fn converges to f belonging to LP.
LP0 2 pi. So we are done. अब इसकी एज ए कॉरलरी हम वो करेंगे जो इसके लिए हमें ये करना था. कॉरलरी ये है, या रिमार्क लिख सकते हैं हम. कॉरलरी क्यों लिखे? रिमार्क. तो ये बंद करता हूँ. ये वील-फिशर थ्योरम एंड आई गो टू जहां हम थे फंक्शनल एनालिसिस में. वो कहाँ गया? ओके, हम आते हैं अपनी जगह वापस. ये था ओके, वो ये था रिमार्क में. नाउ L202 pi is complete. L202 pi नहीं, ये हम यूज करेंगे. इसको लिखेंगे, वो तो हमने अभी किया था. Now suppose that Cn, n runs from minus to infinity, is a square summable sequence. Is a square summable sequence, and so it is less than infinity. जो भी हो, we define, हमें एक create करनी है. यानी I should have right. Let this be contained inside small l2. We define Fn to be equal to summation 1 by 2 pi under root into summation k runs from minus n to n ck e raised to power iota kx. तो मैंने उससे एक फंक्शन डिफाइन की विद द हेल्प ऑफ दीज फंक्शंस. चलो मैं x यहाँ पे मतलब है मेरा fn x. तो अगर ऐसा है तो यहाँ पे x है, तो मैं इन फंक्शन जो मेरी बेसिस है उसकी मदद से मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया. नाउ क्लियरली जो हम पहले कर चुके हैं, 1 by root 2 pi e raised power iota nx and runs from minus infinity to infinity is an orthonormal set. वो तो चेंज नहीं होगा. In L202 pi, therefore for m bigger than n, norm of fm minus fn square would be equal to summation mod k runs from n plus 1 to n. That means it runs both ways, no? Negatives and positive ways. The mod k जब हम लिखते हैं into mod of ck square. Just substitute and use the orthogonality. ये तुम खुद करोगे. Now the sum on the RHS on the right hand side can be made arbitrarily small. इसको हम बोलते हैं tail of the as m approaches infinity. ठीक है? नहीं, as n approaches infinity, because m तो उससे बड़ा ही होगा. n अगर अप्रोच करेगा infinity का तो m तो करेगा ही. बेसिकली हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि यहाँ मैं लिखता हूँ, because this is the tail of a convergent series, so it has to become arbitrarily small, where otherwise this will not converge, and we're assuming that it converges. So tail of a convergent series is always can be made arbitrarily small. So which implies that Fn Fn is Cauchy. Fn is a Cauchy sequence inside this. And पहले तो ये है कि क्या Fn इसके अंदर है? Of course है, क्योंकि e raised power chi x में it's a finite linear combination of a sequence of functions here. So चूंकि ये finite है तो Fn
But since this is a vector space, these fn's belong to L2. Furthermore, they are Cauchy in L2. And we have proved, abhi humne prove kiya ki LP is complete, which means L2 is complete. Because P is bigger than or equal to 1 to infinity, this complete implies that Fn converges to F as n goes to infinity, which implies that Ft, there exists F belonging to L2, 0 to pi, such that what? F of t can be written as 1 by root 2 pi into summation n runs from minus infinity to infinity Cn, और क्या था अपना Cn था e raised to power iota nt. मैंने x लिखा था वहां पे, चलो x ही लिखते हैं. यानी what does that mean? उसका उल्टा भी ट्रू है. There is a one-to-one correspondence between small L2 and big L2. इसके बारे में हम आगे भी एक theorem करेंगे. Actually, this is an isometry वगैरह वगैरह. And if पहले हमने किया था for every f by Bessel's inequality, for every f belonging to L2 0 to pi, there exists, we can find a sequence in small L2. इसी तरह से हमने कहा for every sequence here, I can find an f belonging to L2 0 to pi. इसके बाद हम एक important theorem एक और है जो हमें करना है. मुझे लगा था ये हम जल्दी से कर देंगे. Nevertheless, that's called Gram-Schmidt orthonormalization. तो आते हैं हम Gram-Schmidt orthonormalization में. So नहीं उससे पहले हम एक और रिजल्ट करेंगे before going to Gram-Schmidt orthonormalization.